So hello everyone, कैसे हो आप सभी लोग? If you have watched the thumbnail of this video and came here, you are definitely going to add some value. Just because the video is based on how to start programming, and the main question that arises in our mind is like when starting programming, which language should we start from? So I am Kush Goradia, and in today's video we are going to talk in brief about each and every language, and depending on future perspective which language to start from, depending on our future goals, what language we are going to prefer is going to be covered in this video. So let's so यहाँ पे मैंने सारी लैंग्वेजेस लिख ली है. यू कैन सी पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, स्विफ्ट और कोटलिन. तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं. अगर आप कॉलेज में स्टेप कर रहे हैं इन द फर्स्ट ईयर एंड like you are in computer background, or if you are not even in that and you want to start coding, then C++ and Java could be a better option for you, just because C++ और Java में DSA आ रहा होगा. अभी हम पहले देखते हैं कि why you should start with C++ और Java and not Python. जस्ट बिकॉज पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बहुत सारे टॉपिक्स कवर कम होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस, एंड इवन डीएसए इज लाइक मोर गुड टू लर्न इन सी प्लस प्लस और जावा. अगर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कॉलेज यू हैव सम टाइम, then you can start with Python. Python is a very good language to start with, but if you have some time, then you can definitely start with Python, because Python is easy to learn, beginner friendly language. The code you write in Python is like readable code. What you read, you can understand it very well. And another thing is Vora. What is Vora? Vora is write once, run anywhere. So you can write your code on your machine, and it could be on any operating system it could run. So that's mainly what Vora is. And in Python, what the main thing you learn is like machine learning. Now if you want to learn machine learning, then in machine learning we learn concepts like TensorFlow or SciPy or all these things, and you could be good going with machine learning in Python. तो ये बात करी हमने पाइथन की. अभी हम बात करेंगे सी प्लस प्लस और जावा की. तो सी प्लस प्लस जावा दोनों ही बहुत ही अच्छी लैंग्वेजेस है, और उसमें हम मेनली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पढ़ते हैं. तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, और ये दोनों लैंग्वेजेस इज आल्सो पॉपुलर फॉर गोइंग इनटू फैंग. तो इफ यू वांट टू go into companies like Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, then you could consider these two languages. And even most of the interview, or we can say coding tests that are considered or that are conducted, तो वो जो कोडिंग टेस्ट होते हैं वो भी मेनली मोस्ट ऑफ लोग इन दोनों लैंग्वेज में ही देते हैं. तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंस क्या है. यू कैन स्टार्ट विद एनी, बट मेन थिंग इज अगर आप सी प्लस प्लस करते हो और यू आर गोइंग टू बी कमिटेड टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद सी प्लस प्लस. पर अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करनी है, साथ में थोड़ा प्रोजेक्ट्स भी बनाए, यानी कि डेवलपमेंट की तरफ भी अगर आपको जाना है, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर जावा. तो बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस आर गुड. यू कैन स्टार्ट विद एनी. इट वुड बी नाइस टू गो. चलिए अभी नेक्स्टली बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में. व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? तो अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो दैट इज मोस्टली डेडिकेटेड टू डेवलपमेंट. तो अगर आपको डेवलपमेंट के तरफ ही मेनली जाना है तो यू कैन लर्न जावास्क्रिप्ट, बट इट्स वेरी मच रिकमेंडेड, and we can say that learning data structures and algorithm is very much interesting in the first year itself. So you should learn DSA. So that is what we can say is base. You should not miss base. आपको किसी भी चीज का, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो you should not miss the base of maths. So that is what DSA is. DSA is considered as the base of programming. So definitely you should learn DSA. Then we can talk about development. तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जावास्क्रिप्ट इज व्हाट. एंड डेवलपमेंट में वी आर हैविंग टू टाइप्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट. Development is like web development, Android development, iOS development, all those things are there, which is also being covered like Swift, Kotlin is all related to making projects. So जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट की बात होगी, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट है. इसमें आप जावास्क्रिप्ट में हम वी लर्न थिंग्स ऑफ लाइक फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, एंड वी हैव एंगुलर जेएस, जो हम ये सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं इफ यू वांट टू गो इनटू जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट. तो मेनली हमने ये चार चीज यहाँ पे कवर कर ली है. व्हाट इज स्विफ्ट एंड कोटलिन, व्हाई टू लर्न both these languages. So if you have mainly covered all these things, now you want to get into making projects, you want to build apps and all those kind of things, mainly the iOS or Android projects. If you want to get in, then you can learn Swift or Kotlin. So these are both for learning iOS and Android projects. If you want to build such projects and get into project development or all those things, project building, then you can get into this. So अगर आपने C language पढ़ी है या C++ और we can say Java, तो वी कैन से दैट सी प्लस प्लस जो है वो सी से एक डिराइव्ड लैंग्वेज है. बट इट इज नॉट लाइक कि अगर आपको सी नहीं आती तो आप सी प्लस प्लस नहीं सीख सकते. आप आराम से
दो अगर आपको सी नहीं आती then you can directly start with C++ also. So अगर आपको C लैंग्वेज आती है अच्छे से तो it will be very easy for you to learn Swift. और अगर आपको Java आती है अच्छे से then it will be very easy for you to learn Kotlin. तो अगर आपको C आती है तो you can easily learn Swift, and if you know Java then you can easily learn Kotlin. और ये दोनों languages you learn at the end of the kind of thing when you are not in you are in like third year or third year I think. So at that time you can build projects, you have to build projects for your resume. At that time you will be learning these languages. So if I want to summarize all these things, I want to conclude that if you want to get good logic building and all those things, then you can start with any from C++ or Java. It depends on you what you want to pursue, you can do. तो अगर आपको सिर्फ और मतलब अच्छी कंपनी you want to get into those, so you can start with C++, Java, any of them you can start. Python is also good. Python also has advantages of its own, but if you are getting more time then you can start with Python. अगर आप Python सीखते हैं तो Python से आपको definitely C++ और Java में कंसेप्ट समझने में हेल्प हो रही होगी. सिंटेक्स दोनों का अलग अलग ही है पर आपका जो कंसेप्चुअल जो पावर होगा वो it will rise. So that is about Python. Then after learning this for building projects, you can get into machine learning, or if you are in the lower standards in a school, then you can definitely learn Python just because it's very easy to get a start off with programming. So this was whole video. This was just about giving an overview of which language to start with. So this was about that. If it was helpful to you, then you can comment it. It really helped. And so this was about this channel. If you like this video, then please like the channel. So thank you all.